एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे एंड वी आर गोइंग टू चेक फॉर इट. जैसे first we are going to check for the whole numbers. So in this we are looking for the addition of whole numbers. So addition of whole numbers means when we add two whole numbers. तो जैसे आपको बताया था zero comes in whole numbers. Natural number में we don't count zero. तो but we are talking about whole numbers. तो हमने जो होल नंबर लिया डेट इज 0, द अदर होल नंबर इज 7. तो व्हेन आई ऐड दिस, तो 0 + 7 या 7 + 0 विल कम्स आउट टू बी 7. आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2 + 3. 2 + 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 3 + 2 एंड 3 + 2 कैन बिकम 5. है या नहीं है? या हम 2 + 3 करें, then also I am getting 5. If I am doing 3 + 2, then also I am getting 5. This means if I take the one value to be A, the other value to be B, then I can write A + B is equal to B + A. Is this thing clear? हमें जो आंसर मिल रहा है that is +5. So addition is commutative, means we can shift the numbers. तो if there are whole numbers with us और हमें अगर we have to adjust them in our calculation, then we can put the numbers together. है या नहीं है? सपोज आपको ऐसे ना एडिशन है 10, 60, then 30, 12, 7. सो क्या होगा? जो हमारे टेंस के नंबर है वी विल ट्राई टू पुट ऑल टुगेदर, क्योंकि उनका एडिशन हमें इजी हो जाएगा. 10 + 20 30, 30 प्लस अगर 60 है तो 30 + 60 is 90. फिर जो हमारे ऑल नंबर्स है वी कैन एड अप. तो वी कैन डू दिस एडजस्टमेंट इफ वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ होल नंबर्स. नेक्स्ट पार्ट, now I am checking with subtraction of whole numbers. When I want to subtract two whole numbers, so like I have taken example 2 - 3. ठीक है? And then I reverse it. I have written 3 - 2. So when I am subtracting 2 - 3, I am getting -1 as answer. But when I am subtracting 3 - 2, I am getting +1 as answer. So I can see the difference. In one I am getting -1, in other I am getting 1. So can I say this to be equal to? No. So we can say subtraction is not commutative. This means A minus B is not equal to B minus A. Though we are getting 1 1 in both cases, but with one case I am getting minus sign, but with the other I am not getting minus sign. तो आपको याद है ना, जो number line you have done in class 7th है, and class 6th also you have done number line के +1 is on the right hand side of 0 and -1 is on the negative side. Though different numbers, 1 की वैल्यू is more than -1 का वैल्यू. Next, now we are checking with the multiplication of whole numbers. So I take two numbers 3 and 6. I multiply 3 with 6, I am getting 18. Now I am multiplying 6 with 3. Again I am getting 18. So can I say multiplication is commutative? Yes. So I can say A into B is equal to B into A. Can I say this? बताएं आप, कह सकते हैं ना? In both cases I am getting 18 and with the same sign. है या नहीं है? है ना? Very good. Now moving further. अब क्या करेंगे हम? We are going to check for division. So I take two numbers 8 divided by 2. I am getting answer 4. Now I reverse it. I am doing 2 upon 8. The answer that I get is 0.25.
Are these two equal values? No. So I will say A upon B is not equal to B upon A. So the conclusion is division is not commutative. So we have seen addition and multiplication of whole numbers are commutative, but subtraction and division are not commutative. This we have seen. Moving further. Now I am taking integers. So वही 4 properties, addition, subtraction, multiplication, division, I will count with integers. Now, integers में हम लोग क्या कर रहे हैं? I have taken one integer -5 plus 3. I get the answer -2. Now I reverse it. 3 plus -5. The answer I am getting is -2. So are these two values are equal to each other? Yes, they both are equal to each other. This means addition is commutative. So I can say -a plus b is equal to b plus -a. देखिए हमारा -5 यहां था तो हम -5 ही शिफ्ट करके लेके गए. ये नहीं है कि I have taken the number but I have not taken the sign. It is with the same value. Now for subtraction. Subtraction में my two integers are 5 minus -3. So when I open the bracket, it becomes 5 plus 3. The answer comes out to be 8. Now I am taking -3 minus and then in bracket positive का 5 क्योंकि ये this is plus का 5. So 5. So when I open this, it becomes -3 and -5. Now when I have done the solution of this, the answer is coming -8. So here I am getting 8, here I am getting -8. Can I say both values to be equal? No, I cannot say because one is positive का 8, the other one is minus का 8. So the conclusion is subtraction is not commutative. Clear हुआ? नहीं है ना? So we can say integers, addition of integers is commutative, but subtraction of integers is not commutative. Is this thing clear to you? बताएं आप. Clear है ना पक्का? So moving further. Now we are going to check for the multiplication of integers. So my one integer is -3 and the other is 5. So -3 into 5, the answer is -15. Now I reverse it. 5 into -3. Again the answer is -15. So can I say -a into b is equal to b into -a? Yes, I can say. That's why multiplication is commutative. Now coming to division part. So I have taken 10 upon 5. The answer is coming 2. And now I am taking 5 upon 10. The answer is coming 0.5. So here I have taken all positive integers. है या नहीं है? So क्या हुआ? तो can I say a upon b to be equal to b upon a? No, they are not equal to each other. So division क्या हुआ? Is not commutative with integers. So the same जैसे हमने whole number में देखा था, addition and multiplication are commutative in integers, but division and subtraction are not commutative with integers. Clear हुआ आपको? बहुत अच्छा, very good. Now commutativity of rational numbers, इसमें we are going to look for the addition.
एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. हाउ डू वी एड रेशनल नंबर्स? सो यहां पे आप देखें -2/3 + 5/7 is equal to 1/21, and then I have 5/7 plus -2/3 is equal to 1/21. So हम इससे चेक करते हैं. हम ये देखेंगे कि when I solve this part and when I solve this part, in both ways I am getting 1/21 as answer. So I can say A plus B is equal to B plus A. So addition is commutative for rational numbers. तो आप कहेंगे ये कैसे आ रहा है 1/21? इसको जल्दी से एक सॉल्यूशन करके देख लेते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं दिस पार्ट का. तो इस पार्ट का एलसीएम निकाला, 21 आया. सो 3 7s are 21. हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करा. 7 3s are 21. We multiplied by 3. So this becomes -14 and this become प्लस का 15. तो आंसर क्या आया हमारा 1/21. अब हमने इसको सॉल्व करा. अगेन दोनों का एलसीएम इज 21. सो 5 ये 7 विल गेट 7 3s are 21. तो 5 will get multiplied by 3. 3 7s are 21. 2 will get multiplied by 7. So हमारा क्या आया 15 - 14. आंसर क्या मिला हमारा 1/21. आया ना 1/21. और आगे चेक करते हैं. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. अब इसको हम चेक करके बताते हैं. तो is 2/3 - 5/4 is equal to 5/4 - 2/3. Take out the LCM 12. So 3 into 4, 4 3s are 12. तो 5 into 3, 2 4s are 8 minus 15. Again 12 है तो 5 किससे होगा 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 होगा 4 से मल्टीप्लाई. तो ये आया 15 minus 8. So 8 minus 15 is -7/12 और ये आया 7/12. So can we say this to be equal? No. ठीक है. ऐसी ये एक और सम है, यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन. और उसमें आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. Now we are checking with the multiplication part. So -7 into 6, sorry, -7/3 into 6/5. तो इसका आंसर क्या आया -7 into 6 -42. 3 5s are 15. नाउ हमने रिवर्स कर दिया 6/5 into -7/3. इसका आंसर क्या होगा -42/15. सो आर दे इक्वल? यस. यहाँ पे वी आर गेटिंग -42/15. यहाँ पे भी वी आर गेटिंग -42/15 एंड बोथ आर रेशनल नंबर्स ऑल्सो. सो इसको अब हम एक और सम में चेक करते हैं. 8 4s are 32 प्लस 32, 9 7s are 63. अब हमने -4/7 को पहले लिख लिया, -8/9 को बाद में. सो नाउ वी मल्टीप्लाई अगेन प्लस का 32/63. तो 32/63, 32/63. आर दे बोथ इक्वल? सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, नाउ वी आर प्रूविंग इट. Now we are doing the division part. तो डिवीजन आपको मालूम है, टू डू द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या करते हैं क्या डिवीजन की जगह वी पुट अ मल्टीप्लीकेशन एंड वी रेसिप्रोकेट द वैल्यूज. तो अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया 3/7 into 4/-5. So 5 7s are 35 minus 35/12
and this is coming 3 4s are 12 upon minus 35. So can we say these two values to be equal? No, they are not equal. Not equal. So division is not commutative for rational numbers. So in the property we have seen, as well as by solving it we have proved कि जो properties हैं they are absolutely right. So what did we learn today? Today we learned commutativity of rational numbers. और उसमें हमने क्या देखा है? बताएं आप, हमने क्या देखा कि जब हम होल नंबर्स को ले रहे हैं या हम इंटीजर्स को ले रहे हैं, देन हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन गोज विद दिस प्रॉपर्टी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डजंट फॉलो दिस प्रॉपर्टी. In the next session, more things are there to learn, but that I will take in the next session. Till then, take care. Bye.